Assalamualaikum students. In trigonometry of P3, we have some identities. First of all, we need to explain identities relevant to P1. As you know that sine square theta plus cos square theta is equal to 1. This identity can be modified like this. If I will switch this cos square theta on the right side, then sine square theta will become 1 minus cos square theta. Similarly, I can do cos square theta is equal to 1 minus sine square theta. Also, we have tan theta is equal to sine theta over cos theta. From this third line till onward, we have identities of P3. Sine theta reciprocal is called as cosecant theta. In short form, we say cosec. Cos theta's reciprocal is secant theta, and tan theta's is reciprocal is cot theta. In short form, we can write cosecant theta is equal to 1 over sine theta because they are reciprocal of each other. Secant theta is 1 over cos theta. Similarly, we can say cot theta is equal to 1 over tan theta. Please try to remember, if it is secant, then there should be cos. Mean letter S, then this letter should be C. If you will write secant theta 1 over cosecant theta 1 over sine theta, then it will be wrong. So cosecant theta first letter is C and sine theta's first letter is S. So C, there should be S. Mix नहीं करना आपने. Secant theta के साथ 1 over sine नहीं करते हैं, wrong हो जाएगा. S है तो C, C है तो S. Then 1 plus tan square theta is equal to secant square theta. 1 plus cot square theta is equal to cosecant square theta. Famous identities are sine alpha plus beta. If we have two angles with sine, first angle is alpha, second angle is beta, then the identity will be sine alpha cos beta, means first angle will be attached with sine and the second angle will be attached with cos, plus they will switch cos alpha, then sine beta. On the first place, sine have alpha. In the second place, sine have beta. In the first place, cos have beta. In the second place, cos have alpha. If there will be negative sign, then identity will be remain as it is, but I will use minus sign in the middle. In the compact form, if I want to merge these two identities, then I can do like this. Sine alpha plus beta, this negative red sign is going to show the second identity. Sine alpha cos beta plus cos alpha sine beta is the answer of sine alpha plus beta. But if I am going to use negative sign in between alpha and beta, then there will be negative sign instead of positive in the identity. Similarly, we have cos alpha plus beta. In this, cos alpha cos beta minus sine alpha sine beta. Please try to remember, both cos are on the first place and both sine on the second place. If there is positive sign, then we will use negative sign. If there is negative sign, then I will use positive sign. Both are same. Both identities for cos alpha plus beta and cos alpha minus beta are same, but there is a difference of sign. In the compact form, I can write cos alpha plus beta, cos alpha cos beta minus sin alpha sin beta. If I will use negative sign instead of positive, then this negative sign will become positive. In the last, we have identity of tan. Tan alpha plus beta is equal to tan alpha plus tan beta divided by, here I need to use division sign. 1 minus tan alpha tan beta. There is a product sign between them. If we have tan alpha minus beta, then tan alpha minus tan beta, 1 plus tan alpha tan beta. If we have used negative sign in the numerator, then positive sign in the denominator. If we have positive sign in the numerator, then I have negative sign in the denominator. And the product between tan alpha and tan beta. In the compact form, tan alpha plus minus beta, then tan alpha plus tan beta over 1 minus tan alpha tan beta. If I use negative sign, then I have to use negative in the numerator and positive in the denominator. Some famous questions relevant to paper 3 will behave like this. If we have sine to alpha, then I can write sine alpha plus alpha.
I need to apply sine alpha plus beta identity. Here I have alpha as alpha and beta as again alpha. So sine alpha cos alpha plus cos alpha sine alpha both are same. This expression have 1 over here, 1 over here. So 1 sine alpha cos alpha, 1 cos alpha sine alpha both are same. Like AB plus BA. You can write 2AB. BA will behave like AB. So here I need to use 2 sin alpha cos alpha like this algebraic addition. Next step is if we have cos 2 alpha, then I need to write cos alpha plus alpha. Cos 2 alpha will become alpha plus alpha. Then I need to apply identity cos alpha because in this question alpha will behave like alpha and this second alpha will behave like beta. So cos alpha cos beta will become cos alpha minus sin alpha sin beta will become sin alpha sin alpha. So cos square alpha minus sin square alpha. In short form, I can write sin 2 theta. If I change this alpha with theta, then this identity will become 2 sin theta cos theta. Similarly, cos 2 theta will become cos square theta minus sin square theta. This identity cos 2 theta can be written like this. Cos square theta will become 1 minus sin square theta as we have studied in P1. So minus sin square theta minus sin square theta minus 2 sin square theta. So cos 2 theta will be equal to 1 minus 2 sin square theta. Also we can write cos 2 theta is equal to cos square theta minus and this sin square theta will become 1 minus cos square theta. When I will open this bracket, then this minus will change sign of 1 as well as sine of cos square theta. This cos square theta and this cos square theta will become 2 cos square theta minus 1. Hence, in the last we have tan 2 theta, tan theta plus theta. Again, I need to apply identity of tan alpha plus beta. Tan alpha tan beta will become tan theta plus tan theta. 1 minus tan alpha tan beta will become tan theta into tan theta. So 2 tan theta over 1 minus tan square theta. I hope you got these identities. It will be available on Google Classroom. You can download from that site. So that is the relevant material for P3 trigonometry. Now we need to solve some question regarding to identities of P3. The worksheet I have shared with you, it's question number 31. In this question, he's going to ask, convert your question in cos theta only. So I am going to apply the identities. Cosecant theta, I told you it is 1 over sine theta. It is basically reciprocal of sine theta. 3 sine theta will remain as it is. Cot theta is the reciprocal of tan theta. And tan theta is sine over cos. So cot theta will become cos over sine. Then I need to take the LCM. You can observe 1 and sine theta's LCM will be sine theta. This sine theta will multiply this sine theta. It will become 3 sine square theta plus cos theta will remain as it is. Left side 1 over sine theta will behave as it is. So next step, cross multiplication, sine theta will multiply with 1 and this sine theta will multiply with this sine square theta and cos theta as well. Please try to remember, do not cancel sine theta with sine theta. Please try to make an equation, then you can skip any identity at trigonometric ratio. It depends on you. So after cross multiplication and arranging the values, I will get this. Sine theta, I will take common. Sine theta will become 0. When I will take sine inverse, it will be 0 and 180. Then this side will become 0. Again, I need to convert this expression into cos theta only. So sine square theta identity from the P1, I can write 1 minus cos square theta. Then 3 will multiply with these two. After multiplication and simplification, we will get this expression. Then I need to apply midterm breaking. After midterm breaking, it will become
a P1 question. Cos theta minus 1 is equal to 0. So 1 I will shift on the right side, then I will take cos inverse. So angle will be 0 and 360. Similarly, in this question, I have to move 2 on the right side, then 3 will be divided. So first of all, I need to make its basic angle. All of you know that for basic angle, you need to skip the negative sign. Then you will apply the cos inverse. After applying the cos inverse, you know that you have to take angle in the first quadrant, and then you need to observe where cos will be negative. And all of you know that I told you ASTC, all sine tan cos. So cos will be negative in the second quadrant and in the third quadrant. So you have to find these two angles with the help of trigonometry. So first angle will be like this and second angle will be like this. It means first angle will be 180 plus minus theta, 180 minus theta, and the second angle will be 180 plus theta. So these are two related answers. Next question is 32. Prove that the identity cos 4 theta minus 4 cos 2 theta is equal to 8 sin 4 theta minus 3. First of all, in part 1, we need to take left hand side, that is cos 4 theta minus 4 cos 2 theta. So by taking this, I need to apply the identity cos alpha plus beta. So I'm going to divide in 2 theta into 2 theta. 2 theta plus 2 theta. So again, you know that I told you about the identity cos 2 theta is equal to cos square theta minus sin square theta. So here I need to apply that identity. So cos square this angle minus sin square this angle minus 4 cos 2 theta. Again, cos 2 theta, all of you know that it is equal to cos square theta minus sin square theta. This square will be whole square. Sin 2 theta has identity 2 sin theta cos theta. This square will become whole square. Again, cos 2 theta will convert into its identity cos square theta minus sin square theta. Next target is convert your given expression into sine or cosine only. But according to the question, they are going to convert into sine. So I need to convert this cos square theta 1 minus sin square theta according to P1 identity. Sin square theta will remain as it is. This square will make this 2 as a 4, sin square theta, cos square theta. Then this cos square theta will again become 1 minus sin square theta. Minus sin square theta will become as it is. So after this minus sin square theta minus sin square theta minus 2 sin square theta, this minus sin square theta minus sin square theta will become 2 sin square theta. Then this cos square theta will become 1 minus sin square theta, and in this expression, I need to apply the identity. A square plus b square minus 2ab. 4 sine square theta will multiply with 1 minus 4 sine square theta. Minus 4 sine square theta multiply with this minus will become 4 sine 4 theta. This 2 and this 2 will become 4. In the last, minus 4 multiply with 1 minus 4 multiply with minus 2, 8 sine square theta. Then simplification, 1 remain as it is, 2 will become 4 sine 4 theta, 2 2s are 4 sine square theta. This value minus 4 will become minus 8. This cancel with plus 8. So finally, I will get 4 sine 4, 4 sine 4, 8 sine 4, plus 1 and minus 4 will become minus 3. It will be right hand side. Next part. Next part, he is going to say, solve this equation, this one. According to our observation, this cos 4 theta minus 4 cos 2 theta can be written as cos 4 theta minus 4 cos 2
theta is equal to 3. We have proved in part 1. This portion will become 8 sine 4 theta minus 3 is equal to this 3. Then this 3 will switch on the right side. 8 sine 4 theta is equal to 6. Sine 4 theta will become, again, I have done for you on the right side. So this will become like this. So finally, I will get two values. One is positive after taking square root, one is negative. This value cannot be solvable because when I will again take the square root, then this negative quantity will create a problem in the square root. So I have to solve this question with the help of idea about P1 trigonometry. All of you know that you have to find the basic angle, then you have to find the angle where sine is positive. So that is the solution of for question number 32. Next task is 33. In 33, there is a tricky concept that is called r cos x minus alpha. So बच्चे, first step is write your given expression on the left side and this value on the right side. Again, cos x minus alpha will become cos x cos alpha plus sin x sin alpha. Then you have to multiply this r on these two quantities. Here, please try to observe. I am going to arrange the values. How can I arrange the values? R cos alpha on the first place, then cos x. R sin alpha on the first place, then sin x. Reason? Comparing. कंपेयर करना होगा तो cos x के लेफ्ट पे जो वैल्यू है वो यहाँ पे cos x के जो लेफ्ट पे वैल्यू है इसके साथ कंपेयर होगी, रेड कलर से हाईलाइट की है. sin x के लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू है ये sin x के लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू है इसके साथ कंपेयर हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, ये ब्लैक कलर से हाईलाइट की है. So we will get two equations. Squaring and adding these two, square root 5 square plus 2 square is equal to r square cos square alpha plus r square sin square alpha. Taking r square common, then I will find the value of r3. Then divide 2 by 1. 2 by 1 को divide करेंगे तो r sin alpha को r cos alpha divide करेगा और 2 को square root 5 divide करेगा. So tan alpha is equal to 2 over square root 5. Alpha की value आ जाएगी tan inverse करके. ये आपके पास जो वैल्यूज आएंगी आपने इसको r cos x माइनस अल्फा में प्लग इन करनी है. r की जगह 3 वैल्यू आ जाएगी, अल्फा की जगह जो अल्फा की वैल्यू आएगी वो पुट करते हैं. इसका मेथड 2 है. बच्चे मेथड 2 ये है कि आपके पास ये जो गिवन क्वांटिटीज होती हैं इसमें फर्स्ट जो वैल्यू होगी दैट विल बी a, सेकंड वैल्यू विल बी b. तो इसका शॉर्ट फॉर्म ये है कि r फाइंड आउट करने का मेथड होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर रूट कर दें और अल्फा फाइंड आउट करने का मेथड है tan इनवर्स b ओवर a कर दें. b आपके पास सेकंड क्वांटिटी है, a आपके पास फर्स्ट क्वांटिटी है. वो आपके पास जब अल्फा और r आ जाएगा उसको इस एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे, यू विल गेट द आंसर दिस वन. सेकंड पार्ट को सॉल्व कैसे करना है? सेकंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए आपको आइडिया क्लियर हो गया है कि दिस एक्सप्रेशन इज बेसिकली इक्वल टू r cos x minus alpha. Because we are given by 1 over 2x, तो ये x over 2 हो जाएगा is equal to 1.2. r की वैल्यू आपके पास अभी हमने फाइंड आउट किया, आप प्लीज ऑब्जर्व कर लें, वही वैल्यू है 3 cos x over 2. अल्फा की वैल्यू भी मैंने आपको बताया tan इनवर्स करके वैल्यू आ जाएगी is equal to 1.2. अब आप क्या करेंगे, ऑब्जर्व करें, ये P1 का ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बन गया है. ये 3 जाके डिवाइड होगा, फिर cos इनवर्स होगा और आपने वो वाले क्वाड्रेंट सर्च करने हैं जिसमें cos पॉजिटिव होता है अकॉर्डिंग टू ASTC. add sugar to coffee, ये cos का होता है, ये और यहाँ पे ये दो एंगल्स होंगे आपके पास. सो ये दो एंगल फाइंड आउट करके फिर आपने इस ये जो अननोन है क्वेश्चन मार्क है इसको इधर जाके प्लस करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ x.
तो ये ट्रिग्नोमेट्री का P1 का क्वेश्चन बन गया है, सो यू हैव टू ट्राई बाय योरसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। 34 में आइडेंटिटी प्रूफ करनी है। अगेन वी हैव टू टेक द लेफ्ट हैंड साइड, tan 2 थीटा tan थीटा। आइडेंटिटीज की तरफ मैं जा रहा हूँ जो मैंने आपको ब्रीफ की हैं। tan 2 थीटा विल बिकम tan थीटा प्लस थीटा। tan अल्फा प्लस बीटा की आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं, tan अल्फा प्लस tan बीटा 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। ये आइडेंटिटी का रेफरेंस है। then it will become 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसका एलसीएम ले लिया आप। जब इसका आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम के थ्रू डायरेक्ट मैंने यहाँ पे आपके लिए सॉल्व कर दिया। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज द एलसीएम। 2 tan थीटा विल बिकम एज इट इज tan थीटा टाइम्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इधर मूव कर जाएगा। सो इसको सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन। अगेन इसमें से मैंने tan थीटा कॉमन लिया। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसके लिए मैंने आपके सामने सिंप्लीफाई करना है। ये जो tan स्क्वायर थीटा है इसको साइन ओवर कॉस में कन्वर्ट किया है, ये tan थीटा को साइन ओवर कॉस में कन्वर्ट किया। इसका फिर मैंने एलसीएम लिया। अगेन न्यूमरेटर में एलसीएम, डिनोमिनेटर में भी एलसीएम। तो जब आपने एलसीएम लिया है तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे डेवलप होगा और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर में डेवलप होगा। कॉस स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा मैंने आपको आइडेंटिटी ब्रीफ की हुई है स्टार्ट में, वो कॉस 2 थीटा होता है। तो 1 ओवर कॉस 2 थीटा जो है ये सीकेंड 2 थीटा होता है। ये भी आइडेंटिटी मैंने 12 की। तो ये आपका आइडेंटिटी प्रूव हो गई। देन क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में उसने कहा है इक्वेशन को tan थीटा की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करें। तो बच्चे इसमें cot 2 थीटा विल बिकम 1 ओवर tan 2 थीटा। अब tan 2 थीटा को मैंने आपके सामने ब्रीफ करने के लिए यहाँ पे राइट साइड पे वर्किंग की है। tan 2 थीटा विल बिकम tan थीटा प्लस थीटा। tan थीटा प्लस tan थीटा ओवर 1 माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा। ये 2 tan थीटा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। आपने tan 2 थीटा की डिनोमिनेटर में वैल्यू यहाँ से प्लग इन कर दी है, 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। फ्रैक्शन then fraction. So this value will move in the numerator. So 1 minus tan square theta over 2 tan theta is equal to 1 plus tan theta. Then cross multiplication, 2 tan theta on the right side. After multiplication, I will get a quadratic equation in this form. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मिड टर्म ब्रेकिंग या आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करें, यू विल गेट द टू इक्वेशंस। आगे ये P1 का क्वेश्चन बन गया। P1 के क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है, ये P1 की ट्रिग्नोमेट्री में हमने स्टडी किया हुआ है, वहां से क्वेश्चन सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू दिस 36। In 36 he is going to say first expanding this express to sin x minus cos x in this form. So in part 1, first of all I need to solve this expression sin x minus 30. Sin x minus 30 will become sin x cos 30 minus cos x sin 30. So 2 after multiplication cos 30 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 है, sin 30 की वैल्यू 1 ओवर 2 है। कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं, बट वर्बली आपको याद होनी चाहिए। एसएटी में भी यूज होती हैं ये वैल्यूज। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से कैंसिल होगा, स्क्वायर रूट 3 sin x और 2 से कैंसिल होगा cos x। अगेन you can observe 2 sin x minus 30 minus cos x। उन्होंने कहा है कि r sin x minus अल्फा के इक्वल आपने इसको डेवलप करना है। तो अभी आपने ऑब्जर्व किया 2 sin x minus 30 का आंसर ये है, ये आपके सामने, ये देखिए, ये मैंने यहाँ प्लग इन कर दिया, ये मैंने यहाँ पे इस जगह पे प्लग इन किया, ये इसका आंसर है माइनस cos x देन स्क्वायर रूट 3 sin x माइनस cos x माइनस 2 cos x। अभी लास्ट टाइम मैंने आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था तो मैंने कंपेयर किए थे, मैंने कंपैरिजन में आपको बताया था कि sin x के लेफ्ट पे जो वैल्यू है ये यहाँ पे sin x के जो लेफ्ट पे वैल्यू उसके साथ कंपेयर हो जाएगी। एक्चुअली राइट साइड पे भी मैंने आइडेंटिटी अप्लाई की है, ये sin x माइनस अल्फा की sin x cos अल्फा माइनस cos x sin अल्फा। फिर r को मैंने मल्टीप्लाई किया और मैंने अरेंज किया। अरेंज करने का पर्पस मैंने आपको बताया था कि sin x और यहाँ sin x,
तो लेफ्ट साइड पे आर कॉज अल्फा जो है ये स्क्वायर रूट 3 के साथ कंपेयर हो जाएगी, और यहाँ पे कॉज एक्स है, यहाँ पे भी कॉज एक्स है, कॉज एक्स के लेफ्ट पे आर साइन अल्फा है, ये 2 के साथ कंपेयर हो जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 बन जाएंगे। इक्वेशन नंबर 1 और 2 के बाद स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे 1 और 2 की, तो आपके पास जो यहाँ पे वैल्यू आएगी उस वैल्यू को अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये वैल्यू आपके पास आर की आ जाएगी स्क्वायर रूट 7, और जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स 2 ओवर स्क्वायर रूट 3। तो यहाँ आर और अल्फा की वैल्यू प्लग इन कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। सेकंड मेथड मैंने आपको बताया था कि आर की वैल्यू फाइंड आउट करने का मेथड होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ए हमेशा ये आपके पास होगा, ये ए है और ये बी होगा। तो आर आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से आ जाएगा, और अल्फा की वैल्यू के लिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि tan इनवर्स बी ओवर ए हो जाएगा। तो ये जो कैलकुलेशन है ये बैकग्राउंड एक्सप्लेन करने के लिए मैंने दी। अगर आप डायरेक्ट इस मेथड से भी कर लेते हैं तो आपके पास अल्फा और आर की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन अगर आपने ज्यादा वर्किंग इसको शो करनी है तो ज्यादा वर्किंग के लिए ये मैंने आपके सामने जो इक्वेशन डेवलप किए हैं इनके थ्रू करते हैं। इसके और भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं, ये मैं आपके साथ जो वर्कशीट है ये आप देख लें 37 में, इसके ऊपर ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किए हैं ये मैं आपके साथ गूगल क्लासरूम पे शेयर कर रहा हूँ, वहाँ से आप ऑब्जर्व कर लें। सो आफ्टर दिस वर्किंग you will be able to solve questions regarding to P3 trigonometry.